स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर ऑटोमेशन टेस्टर। हम लोग टेक्निकल राउंड 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर हुक्स इन साइप्रेस और नाइटवॉच। नाइटवॉच और साइप्रेस दोनों नोड.जेएस बेस्ड टूल हैं एंड नाइटवॉच एंड साइप्रेस में हम लोग जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हुक्स आर बेसिकली द लाइफ साइकिल मेथड यूज टू सेट अप अ प्री कंडीशन और लाइक क्लीन अप आफ्टर टेस्ट। इन डिटेल हम लोग देखते हैं कि साइप्रेस फ्रेमवर्क में हम लोग के पास मल्टीपल हुक्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल बिफोर हुक, बिफोर ईच, आफ्टर एंड आफ्टर ईच। और बिफोर और आफ्टर वर्किंग करता है टेस्ट स्क्रिप्ट रन होने से पहले। हम अगर चाहते हैं कि हमारी लाइक लॉगिन सिनेरियो परफॉर्म हो या फिर हमारे ब्राउज़र सेटअप हो, तो हम लोग बिफोर हुक के अंदर सारे स्टेप लिखते हैं। और हम चाहते हैं कि ईच टेस्ट केस रन होने से पहले कुछ प्री कंडीशन रन हो, तो वो सारी चीज़ें हमारे बिफोर ईच ब्लॉक में आ जाती है। और हम चाहते हैं हमारे टेस्ट केसेस रन होने के बाद कुछ फंक्शंस रन हो, कुछ मेथड रन हो, उसके लिए हम लोग आफ्टर ईच यूज करते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट रन हो जाए पूरे फाइल की, देन हम कुछ स्टेप्स रन करना चाहते हैं फॉर क्लोजिंग द डेटाबेसेस और क्लोजिंग द ब्राउजर। हम लोग आफ्टर हुक यूज करते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ हुक्स अवेलेबल also in like Nightwatch framework. In Nightwatch also there is multiple types of hooks are available, that is like before each, after each. It's is basically used for like test setting, used for things like login before test और databases cleanup etc. आप ऐसा करके एक्सप्लेन करके आप अपने इंटरव्यू में बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू यू स्टोर इन्वायरमेंट वेरिएबल। हमारे पास हर एक फ्रेमवर्क के लिए .env फाइल हम लोग यूज करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करने के लिए। तो हम लोग .env में हम लोग cypress.config.js जो मेन फोल्डर होता है, हम लोग वहाँ पर .env फाइल का पाथ मेंशन करते हैं और nightwatch.config.js फाइल में। और इन डिटेल देखते हैं तो हमारे साइप्रेस में cypress.env.json करके भी हम लोग फाइल का नाम स्टोर कर सकते हैं और लाइक सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी हम सेटअप कर सकते हैं। और नाइटवॉच फ्रेमवर्क में आपका nightwatch.config.js फाइल होता है जो लाइक कन्फिगरेशन फाइल होती है नाइटवॉच फ्रेमवर्क की। उसके अंदर हम लोग टेस्ट सेटिंग के अंदर हम लोग डिजायर कैपेबिलिटी के अंडर हम लोग प्रोसेस लिखते हैं, process.env। देन वहाँ पे हम लोग सारे जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल हमें सेट करने होते हैं हम लोग वो सारे लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू सेटअप फ्रेमवर्क फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से फ्रेमवर्क सेटअप करने के लिए हमें mainly setups involve like folder creation, like we have to do like npm install, then we have to do like config file structure. In detail we have to do like for Cypress or Nightwatch, since both are based on like Node.js framework, so we are using like npm init -y, then it will be like install the package.json file. Then inside the folder structure is basically the we have to write the page folder, and we have to do the assertion, we have to give some report folder should be there, there is test folder should be there is command.js file will be there where all the commands are written, there is some assertion folder as well. Then move to the fourth question, the store all drop down elements and click one of them. We have to like for storing all the drop down element, we have to first get all the options and store it into the array. Then we need to click on some specific elements. In the Nightwatch example we can see like here we first mention the browser dot element, then we have to provide the css selector, then we have to provide the selector option, then inside the result parameter as a second parameter we can get that drop down value, like result dot value dot for each value we get that drop down value. And if a particular value is matches, like here we want to click on like book drop down value, so here we check like text dot value is equal to books or not. Here triple equal sign will be like indicate that we check the value as well as the type of the text. So it will be if it is like verify or it will be okay, then it will move and click to that particular option. Then we can move to next question, that is the type of bits. There are multiple types of bit, and first will be like implicit bit, then there is explicit bit and the fluent bit. In detail we can see like implicit bit is like auto wait for an element,
it will be not wait for some particular condition, it will just wait for an element. And then explicit wait is basically used for wait for some condition like element to be clickable or element should be present or not. Then after it will be execute the next line. And there is fluent wait also, that is like custom polling with timeout. Next question, how to call custom commands. So custom commands are basically help us to like utilize some of the commands in our test script. So we can do like in the Nightwatch framework we can use like browser dot my custom command. So inside that we have to write like create a command as like module dot export dot command. Then we write a function there, like this is for like custom logic we need to read, like to write. And then we can do use in our test script file.